Hello and welcome everyone. Here we are with another Power Pack session on legal current affairs. और before I start anything, तीन थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ जो मेरे को आपको देनी है. First that we are coming up with RTNLU, which is supposed to happen on 26th of July. The first phase of RTNLU is going to be there on the 26th of July. अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है. सेकेंड, ये जो भी सेशन होते हैं इनकी PPTs आपकी अवेलेबल हो जाती हैं ऑन टेलीग्राम. सो वी आर कमिंग अप विद द 6 months लीगल करंट अफेयर्स. तो उसका सेशन का अनाउंसमेंट यू विल गेट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर 6 months. जितना भी हुआ है जैन टू जून, उसका एक पूरा रिवीजन सेशन होगा फॉर एटलीस्ट 1 to 2 hours. सो उसके लिए यू हैव टू बी देयर ऑन टेलीग्राम चैनल. सो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि जितने भी सेशंस आप देखते हैं, जितने भी चीज़ें आप ये हो रही हैं, बट ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस वी आर ऑल्सो रनिंग क्लैट रैंक बूस्टर थिंग. अगर जो भी आज हमारे जितने भी बच्चे हैं विथ रिस्पेक्ट टू CL, अगर उनको ये बात नहीं पता है, CL स्टूडेंट्स के लिए ही है बस ये फॉर श्योर. सो all the CL students, if you are not attending it, do attend the CLAT rank booster thing. We are conducting classes and sessions for you, और mock analysis भी है उसके अंदर, and it's everything is there. So it's a 1 week. Every week we are conducting 5 sessions, 4 to 5 sessions जो हमारे होते हैं for sure. Go and attend that. And that is it. These are the few information that I really wanted to give it to you, and I really hope you're going to register for RTNLU soon. Okay, register to RTNLU, right? The first news that we are coming up here is the cough syrup. Majorly cough syrup को ban कर दिया गया है to sell in a very small region जहाँ पे 1000 से कम लोग रहते हैं. लाइसेंस फार्मेसी नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते. Recently in Madhya Pradesh, Chhindwara, it happened that there were 20 kids who died because of it, right? So they have deleted the word syrup from the entry 7 under serial number 13 of Schedule K of Drug Rules 1945 from the Drug 5th Amendment Rule in 2006. That happened, right? और इसका majorly आपको क्या ये याद करना है? No, you don't have to ratify this. Just to make sure you read it nicely and go through it. ठीक है. तो ओल्ड एग्जेम्पशन था कि अगर जहाँ पे 1000 से कम रेसिडेंट्स हैं, वहाँ पे अगर रिटेल फार्मेसी लाइसेंसिंग नहीं है, वहाँ पे भी यू कुड हैव सोल्ड द कफ सिरप्स. बट विद रिस्पेक्ट टू द न्यू रियलिटी, कफ सिरप्स मस्ट नाउ बी सोल्ड ओनली थ्रू ड्यूली लाइसेंस फार्मेसीज नेशन वाइड, और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यू कैन नॉट गेट इट. तो जो बेनेड्रिल है, ग्लाइकोडिन है, ये सारी जितने भी ब्रांड्स हैं, डायबर हनीटस हैं, ये these all are be not be available ऐसे randomly. All require a valid prescription. कौन कौन से cases थे जिनकी वजह से हुआ? But of course this is the recent case. over 20 children were dead. और इसके अंदर there was revealed that diethylene glycol DEG a toxic industrial solvent मिला था, ठीक है. And then we have cases from Chennai that happened in 1972. Mumbai, Bihar and Gurgaon in 1980s it happened. The Gambia 2022 it happened. Uzbekistan also it happened. Globally also it happened. And then recently in MP it happened, right? Procedural trail क्या रही? There was a meeting that happened. Then उसका review हुआ, public feedback हुआ, gazetted notice आ गया, जिसके अंदर yes, the DCC, the Drugs Consultant Committee was headed and chaired by DCGI Dr. Rajiv Singh Raghuvanshi, right? He came up with deleting the word and approved the exemption, right? So जो हमारी next news है, that is on Telangana High Court. Secretly recording a spouse call violates privacy. So थोड़े से dissecting judgments we can see. Telangana High Court ने held किया in 2026 that decided by Justice Navar Appu Rajeshwar Rao
दैट अगर आप अपने स्पाउस की रिकॉर्डिंग करते हो, कॉल्स रिकॉर्ड करते हो सीक्रेटली, तो conversations without consent violates the fundamental right to privacy under Article 21. Such recordings are inadmissible as evidence in matrimonial proceedings. हम इसको evidence नहीं consider करेंगे in the matrimonial proceedings, right? The court dismissed 2 civil revision petitions filed by husband challenging a trial court order that rejected call recordings he sought to produce in his divorce petition, right? Then we have a striking conflict with the Supreme Court, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट ने सीक्रेटली रिकॉर्डिंग को एब्सेंट कंसेंट रिकॉर्डिंग कैन नॉट बी एडमिटेड माना. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विभोर गर्ग वर्सेस नेहा में बोला कि इट इज़ सेक्शन इज नॉट वायलेशन ऑफ द प्रिवेसी. सेक्शन 122 ऑफ द एविडेंस एक्ट मैरिटल privilege doesn't bar evidence in inter-spousal disputes. Privacy under Article 21 must be balanced against the right to fair trial. And recordings must be authentic, verified and produced with safeguards. Okay, that is it. And the doctrinal landscape across courts. First, the case, Puttaswamy case. Then Punjab and Haryana High Court. It refused. Then we have Andhra Pradesh, Raila versus Raila M. Bhuvaneshwari case that discussed the permissibility of one-party recording, allowing it under specific conditions. Chhattisgarh ने held किया recording of wife calls without consent violates Article 21. So we can see the dissenting judgments coming up for the same. Then we have West Bengal's 9-member UCC committee जो form हुई है. As we already know, West Bengal is the next state which is adopting UCC Uniform Civil Code, or the West Bengal constituted a 9-member committee headed by retired Supreme Court Justice Ranjana Prakash Desai to examine the draft UCC Bill 2026. रिकमेंडेड था, कैबिनेट अप्रूव हुआ, बिल जुलाई 2 को, पैनल्स रिपोर्ट एक्सपेक्टेड विद इन 4 वीक्स. बिल्स प्रेजेंटेशन है अगस्त असेंबली सेशन में. नोटिफिकेशन साइडेड द वाइड रैमिफिकेशन ऑफ वॉल्यूमिनस नेचर. ठीक है, तो कमेटी में कौन कौन है? वी हैव अ रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, देन तथागता रॉय फॉर्मर मेघालय गवर्नर, देन वी हैव दुष्यंत नारियाला WB Resident Commissioner Delhi. Then we have Sangamitra Ghosh, Home Secretary, Ratna Bhattacharya, retired anthropology professor, Gopal Chandra Mishra, former Gaur Bengal University VC, Usman Ghani Malik, Calcutta High Court advocate, Nirmala Bhattacharya, former Bengal Sambhag Executive Director. And the political backdrop, as soon as BJP won the state, then they came up with it was a manifesto promise, and they won with 207 seats, and according to Article 44, they can come up with UCC. What are the key provisions in the Assam model में क्या क्या है? Marriage and divorces है, right? Then polygamy ban है, live-in relationship को उन्होंने children from such unions are treated legitimate. Mandatory registration बोला है 1 month के अंदर. Deserted partners may claim maintenance. Exemptions, tribal communities, indigenous group, Kurmis, everything. उनको कैसे डील करना है? They have also given into outside the laws ambit following उत्तराखंड गुजरात मॉडल. ठीक है. Then the Justice Desai and the state level UCC architecture. उत्तराखंड Feb 2024 first post independence UCC came. फिर गुजरात में आया March 2026 में. Then Assam May 2026. West Bengal August 2026 planned 4th. And MP and Maharashtra are in pipeline. All committee chaired or shaped by Justice Ranjana Prakash Desai. The key provisions you can see here with respect to all the 3 cases that we discussed, everything that we have already discussed. Also don't forget to register to RTNLU. जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. टेलीग्राम RTNLU दोनों का लिंक मिल जाएगा with respect to the same. That is it from my end. Thank you so much.